पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस। ओके, चलो सो अभी तक के जो चैप्टर हमने देखे थे उसमें लीनियर मोशंस के बारे में हमें डिस्कशन किया था। ऑलराइट, टुडे इन दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अबाउट द रोटेशनल मोशंस। ओके, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। चलो सो बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं वो पहले समझ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन समझते हैं। देन आफ्टर वी हैव टू थिंक अबाउट वो जो रिजिड बॉडी है उसकी कौन कौन से टाइप्स की मोशंस पॉसिबल है उसके बारे में हम डिस्कशंस करते हैं। ऑलराइट, बिकॉज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज व्हाट रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किस टाइप की मोशंस कर सकते हैं उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो पहले फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट डू यू मीन बाय द रिजिड बॉडी? सो अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी with a perfectly defined and unchanging shape. So rigid body की definitions क्या हो जाएगी? Rigid body is a body with a perfectly defined and unchanging shape. Alright. So suppose ये marker है, okay, which is also called as a rigid body. क्यों? उसका जो shape होगा वो अनचेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा। इसमें यहाँ से यहाँ मूवमेंट कराओ वो चेंज नहीं होगा। So which is considered as a what? Rigid body. Alright. चलो, another one what we can say about the rigid body? The distance between all pairs of the particle of such a body do not change. Okay. Another point for the rigid body, what we can say? The distance between all pairs of the particles of such body do not change. And for an example, wheel. Okay, हमारी कार है, बाइक है, उसका व्हील है, which is considered as a rigid body, वो सर्कुलर रोटेशनल मोशंस करता है, right? Then steel beam, right? हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में हमारा होम है, बिल्डिंग है, उसमें जो बीम होता है, which is also rigid body. Then molecules and so on. Alright? So this is considered as a what? Rigid body, right? चलो. Now, what kind of the motions what kind of the motions can a rigid body have? ये rigid body हमने इधर डिफाइन की कि उसकी मोशंस किस टाइप की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हमें डिस्कशंस करना है। So first one is what? The translations are represented as a sliding motions of the block down an inclined plane. Okay, इधर क्या हमें डिस्कशंस करना है? Rigid body ये कंसीडरेशंस करना है, which is having inclined plane के बारे में हमें डिस्कशंस करना है। चलो, so as shown in the figure, कुछ inclined plane है which is having angle theta, right? अभी ये हमारी बॉडी है, कुछ एक पॉइंट हमने डिफाइन किया है P1 and another one which is considered as a P2. So as shown in the figure, the particles of a body are moving together. ये इसका जो भी पार्टिकल, सपोज ये P1 है, ये P2 है, whatever which is inclined, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जा रहा है, उसके जो पार्टिकल है which are moving together and they have same velocity. But this particle having same velocity at any instant of time. Alright, so it is called as a what? It is called as a pure translation motion. क्या pure translation motion हम बोल सकते हैं। Alright, so this is our regarding about the rigid body which is having inclined plane and downward directions में जा रहा होगा, तब क्या हो जाएगा? P1 and P2 इधर particle constellations क्या है? P so all the particle of the body which is having same velocity at any instant of that, so that time we can say as ये rigid body की जो motions होगी which is pure translation motions. Alright, चलो. Now this second one is what? Second one which is rolling motions of a solid metal or a wooden cylinder down the same inclined plane. यानी ये एंगल थीटा कंसीडरेशंस क्या हुआ है, समथिंग एंगल कंसीडरेशंस क्या हुआ थीटा। Similarly over here same inclined plane हमें कंसीडरेशंस करना है, but the shape of the object which are the different, यहाँ पे ब्लॉक कंसीडरेशंस क्या था, and over here we are considered as a circular wooden cylindrical type का कुछ shape कंसीडरेशंस क्या हुआ है, right? और अभी consider as a solid metallic में कंसीडरेशंस क्या हुआ है, right? चलो, so over here from the figure what we can understand, यहाँ पे हमने point considerations किया हुआ P1, P2, P3 and P4. So as shown in the figure, the particles of the body, ये body हमने जो considerations की है which is not moving with the
velocity, but over here is what, which is not moving with the same velocity at any instant of time. Thus it is not a pure translations motions. क्या it is not in pure translations motion, यानी कि motions है but pure translations motion नहीं है. Alright, so from the figure analysis, P1, P2, P3 and P4 having different velocity at any instant of time, right? And the velocity of the point contact P3. चलो फिगर यहाँ से हम समझ लें, ये contact point बोलते हैं with the surface, यानी कि ये point है यहाँ पे P3, P3 की velocity कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी at any instant of the time, right? So this point which is considered as a 0 and इसकी तो कुछ ना कुछ value रहेगी velocity, right? That means we can say as a what, different velocity होगी कुछ ना कुछ. Okay, so P3 is 0 at any instant if the cylinder rolls without the slipping. So यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, it is not pure translation motion. So it is not a pure translation motion, but it is translation motion plus something else. क्या considerations किया, translation motions plus something else, and which is termed as a what, which is termed as a rotational motions. So simple definition इस तरह की क्या जाएगी, the line along which the body is fixed is called as a what, axis of rotations, and its motion is called as a what, rotational motions. Okay, चलो, so simple definitions अभी क्या हो जाएगी final. So if all the particles motions of a rigid body perform a circular motions and the center of these circles are steady, क्या, the centers of these circles are the steady on the definite straight line, so which is called as a what, axis of rotations. क्या, which is steady on definite straight line, which is called as a axis of rotations. And for an example, our ceiling fan की जो motion होती है, which is considered as a rotational motion, उसकी axis of the rotations, that means एक साफ होता है and जो हमारा ceiling fan होता है, which is rotate into the circular motions. Okay, so you have to comment over here, दूसरी कौन सी types की rotational motions है, that you have to comment over here. Alright, चलो, now we have to discuss about the characteristics of the rotational motions. So the characteristics of the rotational motions, rotation of rigid body about a fixed axis. क्या बता रहे हैं, rotation of rigid body about fixed axis, every particles of the body moves in a circle which lies in a plane which are perpendicular to the axis and its a center on the axis. Okay, ये जो statements right up here, based on that we have to understand this one. चलो, so it's a center on the axis and ये z है, rotations किस ऐसे directions में हो रहा है, कौन सा, ये rigid body का ऐसे rotate हो रहा है. So C1 and C2 which are the center on the axis, ये जो axis है ये center पे उसका center है, किसका, ये circle का, and कोई point P1 है, कोई point P2 है, and which is having C1 P1 which is having radius R1 and C2 P2 which is having radius R2, and this point which is on the axis, which axis, Z axis P3, which is shown over here. So a rigid body rotations about the Z axis. Here we are considering Z axis. Each point on the body P1 or P2 describe a circle with a center, कौन सा है center, C1 and C2 on the axis. Which axis? Z axis. And the radius of the circle, radius क्या है हमारी R1 and R2 is the perpendicular distance. क्या point perpendicular distance, that means ये point से इतना, चलो perpendicular distance of the point P1 and P2 from the axis. Alright, and the point on the axis, कौन सा point axis पे, point number P3, which is remain stationary. Obviously Z directions में, Z axis पे है, so ये rotations होगा, but ये point number P3 है वो तो वहाँ पे ही रहेगा, stationary ही रहेगा. Alright, and कौन से example है हमारे, जो table fan जो होता है as well as the spinning top जो होता है, which is the best example of this one. Alright, चलो, now another characteristics of the rotational motions के बारे में हम
rigid body. ठीक है, so pure translations motions and combined that means what, translations plus rotational body के बारे में, rigid body के लिए हमें डिस्कशन करना है. तो सपोज एक बॉडी है, यहाँ पे हमने ऐसा कंसीडरेशन किया हुआ है, पॉइंट एक ट्रैजेक्टरी पाथ फॉर्म किया हुआ है, राइट. सो पोजीशन नंबर 1 व्हिच इज हैविंग समथिंग ओरिजिन O1, इसका कंसीडरेशन किया हुआ है O2 एंड इसका O3 कंसीडरेशन किया हुआ है. एंड एट डिफरेंट पोजीशंस, ये पोजीशन है, ये पोजीशन, फॉर द तीन पोजीशंस द एंगल व्हिच आर द सेम, दैट मींस अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3. So what we can say, the here the positions does not change. Position जो है as it is, ये shape दिख रहा है वो as it is ही है. We can see over here, ये जो है वो as it is है and यहाँ पे भी as it is है. So position does not change and alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha 3. So what we can say, it's a pure translation motion. तो ये motion जो है वो उसको क्या हम बोलते हैं, pure translation motion. Now case number 2, हमारी कोई एक rigid body है, ये positions पे at the initial, then after some positions, another positions, ये positions पे आ जाती है. पहले alpha 1 था, इधर alpha 2 है, which is angle कुछ ना कुछ change हो रहा है, okay. And third positions में हम considerations करें, यहाँ पे कोई angle alpha 3 है. So the positions change with different locations or different positions. यहाँ पे ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, देन आफ्टर ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया, ओके. पहले ऐसा था यहाँ पे, देन ऐसा हो गया एंड देन आफ्टर लाइक दिस वन. सो एंगल पोजीशंस भी चेंज हो रहा है ना, एंगल व्हिच इज आल्सो नॉट सेम, दैट मींस अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 3. सो ये प्योरली ट्रांसलेशंस तो नहीं, बिकॉज़ ट्रांसलेशंस मोशंस के लिए तो क्या है, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 एंड सेम जो भी है वो तो सेम ही है. ये एज इट इज है, ये सपोज ऐसा हमने समझिए, तो ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है एंड एज इट इज है. सो दिस इज कंसीडर्ड एज व्हाट, ट्रांसलेशंस मोशन. बट इसको ट्रांसलेशंस मोशन हम नहीं बोल सकते. सो इट्स अ कॉम्बिनेशंस ऑफ द मोशन. दैट मींस किसका कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. ये रोटेट हो रहा है धीरे धीरे, राइट. सो इट्स अ कॉम्बिनेशंस ऑफ द मोशंस एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन. ऑलराइट.